Hello students, this video is an introduction to translation studies in which we are going to study what is translation. The word translation has been derived from the Latin word translation, which itself comes from trans and latum, which together means a carrying across or a bringing across. In other words, it is the process of carrying across a message or written content from one text to another, from one person to another, and from one language to a different language. Translation can happen within the same language, that is, from one dialect to another dialect. All languages have different dialects. अगर हम हिंदी का एग्जाम्पल लें तो हिंदी में भी बहुत सारे डायलेक्ट्स अलग अलग जगह बोले जाते हैं, जैसे बघेली, हरियाणवी, गढ़वाली। तो अगर हम एक डायलेक्ट से दूसरे डायलेक्ट में सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर रहे हैं, then this is an example of translation within the same language. But generally, translation takes place from one language to another. जब हम एक भाषा से दूसरे भाषा में टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है? ट्रांसलेशन. So how do we define translation in technical terms? Translation is the comprehension of the meaning of a text and the subsequent production of an equivalent text that communicates the same message in another language. The text that is translated is called the source text, and the language that it is translated into is called the target language. अगर आपको ट्रांसलेशन करना है तो फर्स्ट स्टेप ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आप जो भी टेक्स्ट है उसको समझो. कॉम्प्रिहेंशन. जब तक आप किसी टेक्स्ट को अच्छे से समझोगे नहीं तब तक आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते. So first step is comprehension of the meaning, and then the second step is converting that text from one language into another. जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको हम सोर्स टेक्स्ट कहते हैं, और जिस लैंग्वेज में हम उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट की जो लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं टारगेट लैंग्वेज. So here you can see a diagrammatic representation of the process of translation. The text which is to be translated is known as the source text. The language of the source text is the source language, and the language of the product, the finally translated output, is known as the target language. Now, when the translation takes place, the meaning should be transferred without any kind of distortion, addition or subtraction. ये कहने में बहुत ही सिंपल लगता है कि ट्रांसलेशन क्या है, एक लैंग्वेज से टेक्स्ट को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, बट द होल प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमें बहुत सारी बातें जो है ट्रांसलेशन करते वक्त ध्यान में रखनी होती है ताकि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो बिल्कुल मैच करे जो कि आपका ओरिजिनल टेक्स्ट था. Catford is one of the major translation studies scholars, and he has opined that translation is that in which the replacement of textual material from one language by an equivalent textual material in another language is made. Similarly, Nida and Tabor, they are again translation studies scholars,
and they are of the view that translation consists in reproducing in the receptor language the closest equivalence of the source language in terms of meaning and secondly in terms of style. तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, जो आपका ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है, वो सिर्फ मीनिंग में ही नहीं सिमिलर होना चाहिए निदा और टेबर के अकॉर्डिंग, वो जो है स्टाइल के टर्म्स में भी सिमिलर होना चाहिए. So the question is whether translation is a science or an art. Many scholars believe that translation is an art. Why? Because good translations are expressions of the creative urge of the translators. जब आप एक सेंटेंस को एक लैंग्वेज के शब्दों में दूसरे लैंग्वेज के शब्दों में कन्वर्ट करते हो, then it requires a lot of imagination, and therefore the process of translation is believed to be an art form. But some scholars have also pointed out that translation is a science because technical formalities and complexities are involved in its process. जब आप ट्रांसलेशन करते हो तब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि ग्रामेटिकल रूल्स जो है वो आप प्रॉपरली फॉलो करो, सिंटैक्टिकल रूल्स जो हैं वो फॉलो होंगे. So there are many kinds of rules which are involved in the process of translation, and therefore translation is also believed to be a science. There are many kinds of translations, but we are going to discuss two forms of translations in this video: literal translation and free translation. Literal translation is a direct or word for word translation. In other words, it is the translation of a text from one language to another, one word at a time, without considering the meaning of the text as a whole or without any consideration to cultural context. Literal translation tends to be widely used in legal, technical, or scientific content, where the accuracy of a text is more important than reading fluency. So what is literal translation? Literal translation word for word translation होता है, जहाँ पे हम एक लैंग्वेज का सेंटेंस लेते हैं, जैसे जैसे वर्ड्स आते जाते हैं हम उसे दूसरे लैंग्वेज के वर्ड्स में कन्वर्ट करते जाते हैं. We do not take into consideration the whole text. हम जो है जब वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं तो हम पूरे टेक्स्ट का मीनिंग एज अ होल उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ना ही जो है उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बंदर केला खा रहा था. Monkey was eating a banana. यहाँ पे जो मेन वर्ड्स थे हिंदी में, फॉर एग्जाम्पल बंदर, केला, उसको जो है खा रहा था, उसको हमने इंग्लिश इक्विवेलेंट में किया मंकी, बनाना, ईटिंग, और फिर करेक्ट टेंस लगा के करेक्ट ऑर्डर में जो है वर्ड्स को सेट करके हमने उसका ट्रांसलेशन कर दिया. So this is literal translation. This is a very basic form of translation, और ये ट्रांसलेशन जनरली हम साइंटिफिक या लीगल फील्ड्स के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे कि लैंग्वेज बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, किसी भी टाइप के इडियम्स या फिर जो है राउंड अबाउट लैंग्वेज यूज नहीं की जाती है. The second form of translation is free translation. Free translation is translating a text in such a way that it reproduces the general meaning of the original text. Unlike in literal translation,
Free translation does not involve rendering word to word meaning of a text. Moreover, this type of translation may or may not closely follow the structure or organization of the original text. In addition, it does not pay close attention to details and may involve adding or deleting content while keeping the general meaning intact. Translators usually make such alterations to keep the content and language fluent and natural. So, what is free translation? Free translation is when you first understand the text of the given language and then, in your own words, describe it in another language. Therefore, फ्री ट्रांसलेशन जैसे कि आपने वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन जो था उसमें आपने देखा था कि जो है एक एक वर्ड का जो है ट्रांसलेशन किया जाता है, लेकिन फ्री ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, पहले पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं, उसका मीनिंग अच्छे से समझ लेते हैं एंड देन उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा करने में हो सकता है कि जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं दोनों टेक्स्ट में अलग हो जाएं, सोर्स टेक्स्ट में अलग हो, टारगेट टेक्स्ट में जो है नंबर ऑफ लाइन्स अलग हो जाए। बट what is the point of focus? The point of the focus is the meaning of the text. दोनों ओरिजिनल और ट्रांसलेटेड टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो क्या रहना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। Free translation is also known as creative translation, and it is mainly used in non-technical translations, where the language is more idiomatic, it is more poetic, literary, then the free translation is used. Moreover, translators should have a very good knowledge of both the source language and target language and their cultures in order to do a free translation. फ्री ट्रांसलेशन जो है ऐसे टेक्स्ट के लिए किया जाता है जिसमें कि बहुत सारे एडियम्स फ्रेजेस यूज़ किए हैं, जिसकी लिटरेरी लैंग्वेज है, पोइटिक लैंग्वेज है, जिसमें कि लिटरल मीनिंग कुछ और होता है और सिंबॉलिक मीनिंग कुछ और होता है। टू गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, हम अक्सर जो है हिंदी में बहुत सारे एडियम्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन अकल का दुश्मन है। अगर हम इसमें लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे, then the sentence becomes Mohan is the enemy of mind, which does not make any sense, क्योंकि जो हमारे idioms हैं, लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं, उनमें जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अलग होता है और जो उनका असली जो अर्थ होता है वो अलग होता है ना। तो अकल का दुश्मन का मतलब मोहन जो है बहुत समझदार नहीं है ना। तो अगर हम इसका हम फ्री ट्रांसलेशन करेंगे तो हम जो है हम रियल मीनिंग पे उसके कॉन्सेंट्रेट करेंगे एंड यूजिंग फ्री ट्रांसलेशन द ट्रांसलेशन ऑफ दिस sentence will become that Mohan is dim-witted and which is right. तो जब लैंग्वेज जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है, जब उसमें बहुत सारे आप फ्रेजेस का यूज़ देखते हो, पोइटिक लैंग्वेज का यूज़ देखते हो, जहाँ पे कि सिम्बॉलिकली वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, ऐसे ट्रांसलेशंस में हम लिटरल ट्रांसलेशन यूज़ नहीं कर सकते, हमें फ्री ट्रांसलेशन यूज़ करना पड़ता है। और आप तभी फ्री ट्रांसलेशन जो है अच्छे से कर सकते हो जब आपको दोनों सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज दोनों जगह के कल्चर के बारे में अच्छे से पता है। जब आप समझ सकते हो कि इस शब्द का अर्थ जो है इस कल्चर में ये नहीं होता, इस शब्द का अर्थ जो है ये होता है। So both literal translation and free translation, they have their own advantages in different circumstances.
So here is the difference between literal and free translation. Literal translation is the rendering of a text from one language to another, one word at a time, without considering the meaning of the text as a whole. Literal translation suits scientific and legal texts where the language used is straightforward. Free translation is translation of a text in such a way that it reproduces the general meaning of the original text without considering word to word meaning. Free translation suits literary texts where the language used is figurative and idiomatic. So I hope you enjoyed this video. Keep watching my channel for more such videos and don't forget to like and subscribe. Thank you.